Hello everyone, my name is Dr. Ambad Misra, and in this video we are going to discuss about nephritic syndrome. This video will be both in Hindi and in English. So in last video, if you have watched it, I discussed about the basic pathophysiology that is going to involve in any kind of glomerular pathology. So क्या होता है कि अगर आपका ग्लोमेरुलस अफेक्ट होने वाला है तो दो वेज हैं जिससे वो अफेक्ट हो सकता है. पहला, जो ब्लड सर्कुलेशन में ऑलरेडी प्रेजेंट जो टॉक्सिन्स हैं, जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं, they are going to come and get deposited inside the glomerulus. This is one way. The other way is these toxins or antibodies are itself going to form inside the glomerulus. So ये दो तरीके होते हैं और ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था. तो या तो ये कोई टॉक्सिन हो सकता है, या कोई एंटीबॉडी हो सकती है, कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स हो सकता है. अगर सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस या टॉक्सिन्स या कोई एंटीजन, किसी भी इन्फेक्शन से जो एंटीजन होता है इन्फेक्शन का, या फिर कोई बैक्टीरिया का जो एंटीजन होता है जो ब्लड सर्कुलेशन में है, वो अल्टीमेटली दैट विल कम एंड इट विल पास थ्रू इट विल ट्राई टू पास थ्रू द ग्लोमेरुलस. एंड व्हेन इट विल ट्राई टू पास थ्रू द ग्लोमेरुलस, वो ग्लोमेरुलस में ही डिपॉजिट हो जाएगा. तो क्या होता है, अगर कभी भी ग्लोमेरुलस में इनसाइड द बॉडी अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो वहाँ पे ओरिजिनली नहीं होती है और आके वहाँ पे अगर किसी भी तरीके से थ्रू एनी इन्फेक्शन, थ्रू एनी ऑटोइम्यून डिजीज़ और थ्रू any due to any factor, if that foreign particle comes and resides to any location inside the body where it shouldn't be there in healthy individual, तो वहाँ पे एक उसको एलिमिनेट करने के लिए एक इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट होगा. तो यही होता है, जो भी ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी होती है उसमें यही होता है और कुछ नहीं है. तो कोई भी एंटीजन, कोई भी इम्यून कॉम्प्लेक्स वो आके ग्लोमेरुलस में सबसे पहले, अगर कोई भी चीज़ सर्कुलेशन से ग्लोमेरुलस में आ रही है तो सबसे पहले उसको कौन एनकाउंटर करेगा? सबसे पहले उसको ग्लोमेरुलस करेगा, क्योंकि वो सबसे पहला बैरियर होता है. दैट इज़ द फर्स्ट बैरियर थ्रू विच these unwanted particles need to pass through in order to get eliminated from the body. बट अल्टीमेटली क्या होता है, वो वहाँ पे ट्रैप हो जाता है. ग्लोमेरुलस में ट्रैप हुए, या तो वहाँ से निकल के ग्लोमेरुलस का जो एंडोथीलियम है और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके बीच में ट्रैप हुए, या फिर वहाँ से निकल के बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट के बीच में ट्रैप हुए, या फिर वहीं पे वो फॉर्म हुए. तो अल्टीमेटली ये होगा कि वो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इनिशिएट करेंगे, और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स खाली इसीलिए होगा दैट इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दैट थिंग विच शुड नॉट बी देयर, एंड दैट in turn contributes to your glomerular pathology. So this is the summary that and in detail I have discussed all this in the previous video. Please go and watch the previous video if you haven't yet. So now starting with the nephritic syndrome. So there are two syndromes, nephritic and nephrotic, and we have so much confusion about these. So this is the presentation actually. ये एक presentation होता है कि कोई भी ग्लोमेरुलस की पैथोलॉजी कैसे प्रेजेंट कर रही है अपने आप को. कोई भी डिजीज़ है, अगर उसमें ग्लोमेरुलस या फिर नेफ्रॉन्स या फिर किडनीज इन्वॉल्व हो रही हैं तो वो डिजीज़ अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेगी. देन देयर आर टू वेज, आइदर इट विल बी नेफ्रोटिक और इट विल बी नेफ्राइटिक. द प्रेजेंटेशन कुड बी of two types. One is nephritic and one is nephrotic. In nephritic syndrome, you are mainly going to see hematuria. Hematuria is in both, दोनों में ही, नेफ्रोटिक में, नेफ्राइटिक में, दोनों में ही हीमेचूरिया और प्रोटीनूरिया दोनों ही दिखता है. बट ज़्यादा किस में कौन सा दिखता है? सो इन नेफ्राइटिक हीमेटूरिया ज़्यादा दिखेगा, प्रोटीनूरिया उतना नहीं दिखेगा. दैट विल बी अराउंड 1 to 2 grams per day, or that will be less than 3 grams per day. But in nephrotic it will be more than 3 grams per day. So in nephrotic the proteinuria is predominant, but there is hematuria, and in nephritic hematuria is predominant and there will be proteinuria. But nephritic में
प्रोटीनूरिया कम होगा और नेफ्रोटिक में हेमेचूरिया कम होगा. सो विद दिस नॉलेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेफ्राइटिक सिंड्रोम. सो नेफ्राइटिक सिंड्रोम कैसे प्रेजेंट करेगा खुद को? सो प्रेजेंटेशन में hematuria is predominant. You are going to see hematuria whenever there is nephritic syndrome. And what is nephritic syndrome? Like, there are so many diseases that are going to present as nephritic syndrome. So when they are going to present as nephritic syndrome, they are going to have hematuria. The main presenting feature of those diseases, if they are going to present as nephritic syndrome, will be hematuria. If there is hematuria, you are going to see RBC cast in some of them. There will be pyuria and mild to moderate proteinuria. Proteinuria is going to be mild to moderate, not nephrotic range. That is more than 3 grams in 24 hours. And obviously there will be hypertension. Because hypertension क्यों होगा? Glomerulus से फिल्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो जो वेस्ट पार्टिकल हैं, जो भी टॉक्सिन्स हैं, और GFR कम होगा, तो जो भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम है वो एक्यूमुलेट होगा विद इन द सर्कुलेशन. तो अगर सर्कुलेशन में वॉल्यूम एक्सेस में होगा तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी हाइपरटेंशन. सो दिस इज द प्रेजेंटिंग फीचर ऑफ हाइपरटेंशन, एंड मेनली इट इज हेमेचूरिया एंड माइल्ड टू मॉडरेट प्रोटीनूरिया. एंड वन मोर थिंग, if any disease is going to present as nephritic syndrome, it's not like it is always going to be presenting itself as nephritic. वो ट्रांजिशन कर सकता है नेफ्राइटिक से नेफ्रोटिक में, और कोई भी नेफ्रोटिक ट्रांजिशन कर सकता है नेफ्राइटिक में. सो लेट्स जस्ट से कोई भी डिजीज़ है जो इनिशियल स्टेज में एज अ नेफ्राइटिक प्रेजेंटेशन है उसका, in later stages of that disease, the same disease can have the presentation of nephrotic syndrome. So you cannot say if any particular disease is either nephritic or nephrotic. There are some, but most of them, whenever there is a progression of the disease, that is going to present as nephrotic. So what is the basic pathogenesis of nephritic syndrome? The basic pathogenesis, it involves the सबसे पहली चीज़ जो एनकाउंटर होगी अगर ब्लड सर्कुलेशन में कोई भी टॉक्सिन या कुछ भी है, तो वो आपका ग्लोमेरुलस है. सो सबसे पहले जो डैमेज होगा ग्लोमेरुलस में होगा. सो देयर विल बी एक्सटेंसिव डैमेज टू ग्लोमेरुलाई. देन ग्लोमेरुलाई में डैमेज होगा तो क्या डैमेज होगा? उसमें चार्जेस होते हैं, उसमें देयर आर नेगेटिव चार्जेस विच आर गोइंग टू रिपेल द प्रोटीन्स, and there, if there will be more protein, there will be more protein in the filtrate. अगर ज़्यादा प्रोटीन फिल्टर होगी then there will be proteinuria. सो ग्लोमेरुलाई के डैमेज होने की वजह से प्रोटीनूरिया इस तरह से होगा. पोर का साइज़ बढ़ेगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन होगा, फाइब्रोसिस होगी तो पोर का साइज़ बढ़ेगा. ओवरऑल पोर का नंबर कम होगा लेकिन पोर की साइज़ बढ़ेगी. देयर विल बी इंक्रीज इन द पोर साइज, बट ओवरऑल नंबर ऑफ द पोर्स इज गोइंग टू डिक्रीज बिकॉज ऑफ द फाइब्रोसिस एंड स्क्लेरोसिस. So that's why there will be proteinuria, because pore size has increased. But there will be decrease in GFR. The overall filtration is going to get decreased because there are less number of pores that are present as compared to it was before. तो इसीलिए GFR फॉल करेगा. ठीक है. यूरेमिक सिम्टम्स मीन्स जब फिल्ट्रेशन हैम्पर होगा, when the filtration will be hampered, there will be accumulation of toxins, accumulation of waste particles that will be present inside the circulation. So वो उनकी वजह से कुछ यूरेमिक सिम्टम्स होंगे. उन यूरेमिक सिम्टम्स में बेसिकली you will have malaise, like tiredness and itching and all those symptoms. There will also be salt and water retention, and that will cause edema and hypertension. There is more fluid inside the body जो कि ब्लड वेसल से निकल के जो उसके पास के टिश्यूज़ हैं उसमें एक्यूमुलेट होगा, उसकी वजह से एडेमा होगा. ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, उसकी वजह से हाइपरटेंशन होगा. सो दिस इज द बेसिक पैथोजेनेसिस ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम. नाउ व्हाट आर द डिजीजेस दैट आर गोइंग टू प्रेजेंट देमसेल्व्स एज नेफ्राइटिक सिंड्रोम्स? सो देयर आर मल्टीपल डिजीजेस एंड वी आर गोइंग टू व्यू ऑल ऑफ देम वन बाई वन. इसके अलावा आपको नेफ्राइटिक में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है.
And before starting, I am telling you, please don't skip the last part, because last part में मैं आपको बताऊंगा the whole summarization of nephritic syndrome. सारी इंडिविजुअल डिजीजेस के जो डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं, लाइक 2 से 3 डिफाइनिंग फीचर मैं बताऊंगा हर एक डिजीज़ का, जो कि आपको याद करना है, एंड दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू for cracking MCQs, and that will be helpful for the exam overall. So please don't miss the last part. So starting with all the diseases, we have post streptococcal glomerulonephritis, membranoproliferative glomerulonephritis. See, MPGN has both the features. It could present itself as nephritic or nephrotic, or both together. So we are going to study MPGN in nephritic. So PSGN, MPGN, rapidly progressive glomerulonephritis, that is your RPGN. And RPGN is not a disease itself, it is a presentation. So what are all the diseases that are going to present themselves as RPGN? We are going to study that. So RPGN में कौन कौन सी disease आ जाएंगी? You will have your Goodpasture syndrome, that is also known as anti-GBM, anti-glomerular basement membrane disease. You will have your lupus nephritis, that is the systemic manifestation of the that is the part of SLE. So the nephritic presentation of SLE is your lupus nephritis. You have ANCA, small vessel vasculitis, that concludes your granulomatosis with polyangiitis, microscopic polyangiitis, and Churg-Strauss syndrome, that is known as eosinophilic granulomatosis with polyangiitis. It is also known as EGPA. Now we have IgA nephropathy and Alport syndrome. So these are all the diseases that we are going to discuss, and in the end I will tell you like the summarized version, so that you can easily remember these diseases, and you can easily pick from any MCQs, and you won't have any difficulty in differentiating these diseases. Now first starting with the PSGN, remember this is, इसको आप देखेंगे चिल्ड्रंस में 2 to 14 year old children. Remember, children, there will be some underlying infection that will be from streptococcus. सो या तो स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से आपको पेशेंट को थ्रोट इन्फेक्शन होगा, वो दैट विल प्रेजेंट इटसेल्फ एज फेरेंजाइटिस, या स्किन इन्फेक्शन होगा, दैट विल प्रेजेंट इटसेल्फ एज इम्पेडिगो. सो या तो थ्रोट इन्फेक्शन पहले या फिर स्किन इन्फेक्शन पहले, उसके बाद अगर कोई ग्लोमेरुलर सिम्टम्स आते हैं, कोई नेफ्राइटिक सिम्टम्स आते हैं, तो वो PSGN होगा. हाउ दैट वी विल सी. सो सबसे पहले तो 2 to 14 year old चिल्ड्रन में होगा, आफ्टर थ्रोट इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन, दैट इज फेरेंजाइटिस और इम्पेडिगो. और ये इम्यून मीडिएटेड होता है, दैट इट विल बी इम्यून मीडिएटेड. देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज एंड इम्यून कॉम्प्लेक्सेस विच आर फर्दर गोइंग टू contribute to the pathology of PSGN. रेनल बायोप्सी में क्या देखेंगे हम? देयर विल बी मिजेंजियल एंड एंडोथीलियल हाइपरसेलुलैरिटी. क्यों होगा? मिजेंजियम और एंडोथीलियम का जो सेल का नंबर है वो इंक्रीज होगा. कहीं भी अगर इन्फ्लेमेशन होता है या फिर कहीं भी कोई डैमेज होता है कहीं भी बॉडी में, तो उसको ओवरकम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंस, देयर विल बी इन्फ्लेमेटरी कैस्केड, देयर विल बी इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, सब उस जगह पे आ जाएंगे क्योंकि उनको वो इन्फ्लेमेशन को एलिमिनेट करना है. एंड उसके साथ साथ देयर विल बी इंक्रीज इन नंबर ऑफ नॉर्मल सेल्स विच आर प्रेजेंट अराउंड दैट अराउंड दैट फोकस ऑफ इन्फ्लेमेशन और फोकस ऑफ डैमेज. तो इसीलिए मिजेंजियल और एंडोथेलियल हाइपोसेलुलैरिटी. देयर विल बी सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स that will be visualized as humps. This is really important for PSGN. In PSGN, sub-epithelial deposits. We have two kind of deposits. एक होता है सब एंडोथेलियल, एक होता है सब एपिथेलियल. हम उसको भी डिस्कस करेंगे क्या होता है और कैसे अलग होते हैं वो. सो रिमेंबर these are सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स. और वो अपीयर होते हैं जब भी हम बायोप्सी करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में. दे अपीयर एज हम्प्स.
So hump is a defining feature of PSGN. Whenever you see hump, it is going to be PSGN. So subepithelial hump or deposits or humps. What else you will see? You will see glomerular infiltrate of polymorphonuclear leukocytes, granular, subendothelial immune depositions that will be of IgM, IgG, C3 and C4. So what does it mean? Glomerular infiltrate means your glomeruli is being infiltrated with these cells, and also your granular, here you see subendothelial immune deposits, IgG, IgM, C3 and C4. First we will see how to differentiate subendothelial and subepithelial. See, what is endothelium? Endothelium क्या होता है? Endothelium are the cells which are lining your glomeruli. जो glomerulus की जो कैपिलरीज होती हैं, उनको जो सेल्स लाइन करती हैं, उनको हम एंडोथीलियम बोलते हैं. एंडोथीलियम के बाद आपका आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद आती है पोडोसाइट्स. सो पोडोसाइट्स आर said to be visceral epithelium. So your podocytes represent epithelium, and your the cells that are lining the glomerular capillaries, those represent endothelium. So subendothelium means the deposition is between endothelium of glomerular capillaries and basement membrane. So this is your endothelium, and here this space is your the space that is inside the glomerulus, your glomerular capillaries. This is your basement membrane, and these are your food processes of the podocytes. So if the deposit is between here, if you can see at this place, if the deposition is here, that is your subendothelium, between endothelium and basement membrane. So these are your subendothelial deposits. And if deposition is between basement membrane and epithelium, that is podocyte, that is your subepithelial. So now you know what is subendothelial deposit, what are your subepithelial deposit. So subendothelial deposit you are going to see, that means here these are going to deposit here, and humps you are going to see in subepithelial. Here I have attached one diagram. You see this structure, this is your endothelium, this is your endothelium, this is your basement membrane, this is your epithelial cells, that are your podocytes. So अगर deposition epithelial cell यानी पोडोसाइट और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में हो रहा है, तो वो डिपोजिशन सब एपिथेलियल डिपॉजिट होगा, और वो अपीयर होता है एज अ फॉर्म ऑफ हम्प. सो दीज आर योर हम्प, these are your subepithelial humps. So if this is your basement membrane, this is your epithelium, if something is going to get deposited in between, so जो epithelium है वो ऐसे रेज करेगी, और जब ऐसे रेज करेगी इसके बीच में there is deposition, और उसको हम इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और बायोप्सी में एज अ हम्प अपीयर होता है. सो दैट इज योर subepithelial hump. Here you can see, if you can appreciate, this is your hump. This over here is your hump. Moving on to further about PSGN, it is your immune mediated disease. It's obvious. अच्छा, immune mediated disease क्यों है PSGN? See, PSGN में जो स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं. अब वो एंटीबॉडीज या तो ब्लड सर्कुलेशन में पहले से हैं, या फिर एंटीजेंस पहले से ब्लड सर्कुलेशन में, या फिर एंटीजन एंटीबॉडी का इम्यून कॉम्प्लेक्स पहले से सर्कुलेशन में. जब वो आता है और वो किडनीज के थ्रू पास होने की कोशिश करता है तो ग्लोमेरुलस में डिपॉजिट हो जाता है. अब जब कहीं भी कोई भी चीज़ डिपॉजिट होती है बॉडी में जहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट होगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इनिशिएट होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कैस्केड शुरू होगा. ये सारी चीज़ें जो हैं उसको निकालने के लिए होती हैं, लेकिन वो इन टर्न ग्लोमेरुलस को और उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से हमें सिम्टम्स होते हैं इन PSGN.
So that being said, this is against streptococcal antigens and circulating immune complexes. एंटीजेंस एंड सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो कि कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड सेल इंजरी करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया. How PSGN is going to represent itself? It is going to represent as there will be acute nephritic picture, obviously. There will be hematuria, as it is going to present itself as nephritic. There will be pyuria, edema, hypertension, and proteinuria that will be less than 2 grams in 24 hours. That is not nephrotic range, or not not at the level which you are going to see in case of nephrotic syndrome. Now, if this whole thing, all these damage that is occurring in the pathogenesis of PSGN, अगर वो बहुत फास्ट होता है, बहुत तेजी से होता है, within days to weeks, तो PSGN can also present itself as RPGN. So here, like when you will see RPGN, you will see that then that PSGN can also present itself as RPGN. So symptoms could be severe enough to present as RPGN, but it has good prognosis overall. Management में क्या करेंगे? Supportive. Management is supportive. You will control the hypertension and edema through through ACE inhibitors, or you can loop diuretics like furosemide, or you can use calcium channel blockers. So you can use calcium channel blockers or furosemide, and in antibiotics you will use penicillin for 7 to 10 days. Now there will be complete resolution of symptoms. जिस दिन से जो नेफ्राइटिक सिम्टम्स है वो स्टार्ट हुए हैं, उसके बाद वहाँ से स्टार्ट करके 3 से 6 वीक्स में सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं यूजुअली, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो. एल्डरली में क्या होता है? इफ़ दिस हैपन्स इन एल्डरली, देयर इज बैड प्रोग्नोसिस. 60% ऑफ those patients are going to land up into nephrotic range proteinuria and end stage renal failure. Now let's talk about adult PSGN. PSGN can also occur in very less fraction of adult people. That will be after infection, or if there is a history of diabetes mellitus, or the patient is immunocompromised. There will be subepithelial deposits of IgA. There could also be deposition of C3. And you will see rope and garland pattern on immunofluorescence. There will be usually MRSA infection, that is your methicillin resistant Streptococcus aureus, and the management will be vancomycin, steroids, and cyclophosphamide, because in adult PSGN it will be more severe, and it cannot be managed by the use of penicillin. So we will have to use vancomycin, and to control the fibrosis and sclerosis and ongoing damage, we will have to use steroids, and to suppress immune mediated damage, we will have to use cyclophosphamide. Because कोई भी ग्लोमेरुलर पैथोलॉजी अगर वहाँ तक लिमिटेड है तो ठीक है, बट मोस्ट ऑफ देम दे प्रोग्रेस टू योर टिब्यूल्स एंड योर ट्यूबुलर इंटरस्टिशियम. स्टार्ट होता है ग्लोमेरुलस से, ग्लोमेरुलाई डैमेज होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, पोडोसाइट्स डैमेज होंगे, बॉमन्स कैप्सूल डैमेज होगा. बट द ओनली वे फॉर दोज इम्यून कॉम्प्लेक्सेस एंड दोज immune cells and those complements and all these stuffs, the only way for them is to go further downstream into the tubules from glomerulus. वो ऐसे पीछे नहीं जाएंगे, वो आगे ही जाएंगे, और आगे अल्टीमेटली वो कहाँ जाएंगे? they will go into tubules. और जब tubules में जाएंगे तो वहाँ भी तो वो same चीज़ करेंगे ना. They will have the same inflammatory response when they will accumulate inside the tubules. So there will also be damage. There will also be fibrosis, sclerosis, and there will also be this will also involve all these tubules and the interstitium surrounding the tubules. So जब disease progress करती है
कोई भी ग्लोमेरुलर डिजीज हो, अगर वो कंट्रोल में नहीं है, दैट अल्टीमेटली इज गोइंग टू इन्वॉल्व योर टिब्यूल्स. So that's why to counteract that, we will have to use steroids and cyclophosphamide. Moving on to next, your MPGN, membranoproliferative glomerulonephritis. इसको हम mesangiocapillary भी बोलते हैं. Why? Because mesangium and your glomerular capillaries are going to get involved in MPGN. The two age groups, childhood and a young adult. This disease is idiopathic. There is no regular pattern, there is no regular distribution, or there is no specific cause of this disease. So this is idiopathic. It is also immune mediated. The damage is the damage to your glomeruli and your mesangium will be immune mediated. It can present as nephritic, nephrotic, or combined. Okay, it can present as any of them. What we will see on renal biopsy. MPGN के केस में renal biopsy में क्या दिखेगा? GBM की थिकनिंग दिखेगी एंड इम्यून डिपॉजिट्स दिखेंगे GBM में, और mesangial proliferation दिखेगा. I have attached one picture. See, this is your normal glomerulus. This is your normal glomerulus. What you are seeing here at all these places, here, all these places, you are going to see mesangial proliferation. So this is your normal picture. This is the picture after the mesangium has proliferated so much that it has occupied all the Bowman space. It had you can't see any empty or free space. In some of these you also cannot manage to appreciate the capillaries, the lumen of the capillaries. So this is mesangial proliferation. It is going to occupy all the Bowman's capsule. So there will be GBM thickening. Your basement membrane will be thickened because there will be immune deposits. The immune immune cells and those antibodies, all those are going to come from the glomerulus, and they are going to get deposit on the basement membrane. So when they are getting deposit on the basement membrane appear होगा कि वो ऐसा thick हो गया है, और उसकी वजह से mesangium जो है वो भी proliferate करेगा, mesangial cells का नंबर बढ़ेगा और वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को ऑक्यूपाई कर लेंगी, बॉमन्स कैप्सूल को पूरा फिल कर लेंगी. तो ऐसे दिखेगा. MPGN के कुछ टाइप्स होते हैं, वो हम देखेंगे. सो MPGN टाइप 1, it is most common. MPGN type 1 is associated with hepatitis B and C. This is really important. You are also going to see in case of cryoglobulinemia and SLE. What happens in these diseases? There is what happens when there is glomerular deposition. See, the immune complexes, they are going to come and they are going to get deposited inside the glomerulus. और ये कॉम्प्लेक्सेस दो तरह से हो सकते हैं. या तो ये सर्कुलेशन में थे, सर्कुलेशन से आके ग्लोमेरुलस में डिपॉजिट किए हों, या ये वहीं पे बने हों अराउंड बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो आइदर these immune complexes which were already present inside the circulation and now they have come inside, come through the glomerulus, and now they have got deposited around the glomerulus and on the basement membrane, or these complexes has itself formed on the basement membrane because some immune antibodies are going to attack to something that has some kind of antigenic property. So in what happens in autoimmune disease, वो बॉडी की खुद की सेल्स को एज अ एंटीजन कंसिडर करता है और एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट फॉर्म होने लगती है. तो जो जीबीएम पे जो भी कुछ प्रेजेंट है उसको वो एंटीजन कंसिडर करती हैं और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं. सो या तो इन सीटू फॉर्मेशन, मतलब वहीं पे बनी है, या फिर सर्कुलेशन से आई हैं. हेपेटाइटिस सी, कोई भी इन्फेक्शन में क्या होता है, कोई भी इन्फेक्शन में कोई ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है. वो ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है और वो एंटीजन सर्कुलेशन में होता है. सर्कुलेशन से फिर वो या तो सीधे एंटीजन के फॉर्म में या फिर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आकर डिपॉजिट होता है.
So that's how in MPGN, remember hepatitis C and B and cryoglobulinemia. There will be very important defining feature that you are going to see in case of MPGN, that is your tram tracking. This is very important. ट्रैम ट्रैकिंग में क्या होता है, मिजेंजियल सेल्स जो होती हैं वो, सी दिस इज योर एंडोथीलियम, दिस इज योर एंडोथीलियम, दिस इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन. उसके बीच में ऐसा कोई ऐसा स्पेस कोई नहीं होता है नॉर्मल, उसमें ऐसे अप्रिसिएट नहीं कर सकते. दे आर लाइक सुपर इम्पोज टू ईच अदर. बट क्या होता है जब मिजेंजियल प्रोलिफरेशन होता है, नंबर ऑफ सेल्स ऑफ मिजेंजियम आर गोइंग टू इंक्रीज very fast, and they are going to get deposited in between these two structures, that is your endothelium and basement membrane. So when they are going to get deposited, these two are going to get separated, और उसके बीच का स्पेस फिल हो जाएगा by proliferated mesangial cells. So वो appear होता है on biopsy as tram tracking. So you can see, if you can appreciate this area here, you can see like a double contour, like a tram tracking like this. So one is your endothelium, one is your basement membrane and epithelium, और उसके बीच में mesangial cells हैं. तो वो as a tram track ऐसे appear होता है. See, it's like this. यहाँ पे आप देख सकते हैं. You can easily appreciate here. See, all this is your mesangial cell, and these are separated. This is the electron microscopy picture, and this is the biopsy picture. You can appreciate in both these picture how tram tracking appears in case of MPGN. Moving on to type 2, it is also known as dense deposit disease. There will be hypocomplementemia. This is very important. Hypocomplementemia you are going to see in case of type 2 MPGN. Complements, C3 complements क्यों डिक्रीज होते हैं? क्योंकि there is something called C3 nephritic factor. So C3 nephritic factor जो होता है वो क्या करता है कि C3 को चेक में रखता है. अगर उसमें डिफेक्ट होता है तो C3 का एक्सेस में एक्टिवेशन हो जाता है, और वो the body will lose those, they are not going to reside inside the body is going to lose those, because they are forming inside the kidneys, and ultimately they are going to pass, they are not going to stay there forever. So that's why there is decrease in number of C3. There will also be GBM thickening due to dense deposit. Moving on to type 3. Type 3, there will be sub-epithelial, sub-endothelial, both types of depositions. GBM thickening hogi, and it is very less common. So please, I would say you keep in mind type 1 and type 2. In type 1, remember hepatitis C and B. In type 2, remember hypocomplementemia, that is decreased C3. What is the presentation? Presentation will be hematuria, obviously. There will be proteinuria, pyuria, fatigue, malaise, that is your uremic symptoms. It can also progress to RPGN. MPGN can also progress to RPGN. It can also progress to nephrotic syndrome and end-stage renal disease. And all of these, also renal insufficiency, and all of these has really poor outcome. If MPGN progresses to these, it has really poor outcome. How you will manage? You will manage by steroid, plasmapheresis, that is plasma exchange, and immunosuppressants. Moving on to next, that is your RPGN, rapidly progressive glomerulonephritis, where the renal failure is going to occur over days to weeks. It occurs very fast, over days to weeks. 50% of them are associated with some kind of syndromes. 50% में कोई ऐसा सिंड्रोम इन्वॉल्व होगा जिसकी वजह से RPGN की पिक्चर दिखेगी, और 50% में द कॉज इज अननोन, इट इज़ इडियोपैथिक. सो अभी हम देखेंगे कि कौन से कॉजेज हैं, कौन से सिंड्रोम्स हैं जिसमें हम RPGN की पिक्चर देखते हैं. व्हाट इज़ द RPGN पिक्चर? RPGN पिक्चर मीन्स देयर इज रीनल फेल्योर, रीनल इनसफिशियंसी, विद इन डेज टू वीक्स. दैट इज योर RPGN पिक्चर. सो कौन से सिंड्रोम्स है जिसमें RPGN पिक्चर देखी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. What is the presentation that you are going to see in case of RPGN? Hematuria, obviously, RBC cast. You will see pedal edema. Uremic symptoms. Uremic symptoms is when there is accumulation of toxins, waste materials, and all those things that should be eliminated from the body, but they are staying inside the circulation because your glomerulus is not working properly. So उसकी वजह से कुछ symptoms होंगे. That is your malaise, nausea, confusion, and itching.
So these are the uremic symptoms. You will see uremic symptoms in case of RPGN. There will be proteinuria and that can also be nephrotic range. See, कभी भी कोई भी डिजीज जब इनिशियल स्टेज में प्रेजेंट करती है तो वो नेफ्राइटिक प्रेजेंटेशन शो करेगी. बट जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है और डिजीज प्रॉपरली अगर उसको ट्रीट नहीं करते हैं या फिर वो रिजॉल्व नहीं करती है तो फर्दर डैमेज को कंटिन्यू करती है. और जब डैमेज फर्दर होगा तो फ्रॉम नेफ्राइटिक इट कैन ट्रांजिशन टू नेफ्रोटिक. हाइपरटेंशन कुछ में दिखेगा. रेनल बायोप्सी में क्या दिखेगा? क्रेसेंट, बिकॉज इट्स आरपीजीएन. सी आरपीजीएन as the humps, the subepithelial humps that you are going to see in case of PSGN. You are going to see these tram tracking in case of MPGN. Similarly, you are going to see crescent formation in case of RPGN. These are differentiating features that you will be seeing on the renal biopsy. Crescent actually होता क्या है? We all know that crescent we are going to see in case of RPGN. But what is crescent actually? क्या होता है कि किसी भी तरह से जब भी कोई डैमेज होता है ग्लोमेरुलस में उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में, क्रेसेंट कैसे फॉर्म होता है कि जो डैमेज होता है जब वो योर पैराइटल एपिथेलियल सेल्स, पैराइटल एपिथेलियल सेल्स मीन्स वो सेल्स जो बॉमन्स कैप्सूल को सराउंड कर रही हैं, जिनसे बॉमन्स कैप्सूल की बाउंड्री बन रही है, तो उनको हम पैराइटल एपिथेलियल सेल्स कहते हैं. उसके अंदर आपके पोडोसाइट्स होते हैं, उनके बीच में बॉमन स्पेस होता है. तो अगर बॉमन्स कैप्सूल की जो सेल्स हैं दैट इज और पैराइटल एपिथेलियल सेल्स उनमें डैमेज होता है तो वो क्या करती हैं, एक ऐसा पॉकेट सा बना लेंगी. वो पॉकेट सा बनाएंगी और उस पॉकेट के बीच में जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है, जो इम्यून सेल्स हैं, जो फाइब्रिन है, जो थोड़ा बहुत फ्लूइड है, जो भी फिल्ट्रेट है, वो आके डिपॉजिट होगा और वो एक क्रेसेंट जैसा फॉर्म करेगा. तो वो ग्लोमेरुलस में ऐसा क्रेसेंट ऐसे अपीयर होता है. तो वो जो पैराइटल एपिथेलियल सेल्स हैं जो बॉमन्स कैप्सूल को लाइन कर रही हैं, उनके बीच में पॉकेट सा बनता है और उसमें फाइब्रिन का, इन्फ्लेमेटरी सेल्स का डिपोजिशन होता है और वो अपीयर होता है एज अ क्रेसेंट. दिस इज हाउ योर क्रेसेंट अपीयर्स. यू सी दिस क्रेसेंट, दिस इज बिटवीन द पैराइटल एपिथेलियल सेल्स और इसमें योर इन्फ्लेमेटरी सेल्स, योर फाइब्रिन और डिफरेंट काइंड ऑफ इम्यून सेल्स जो कि डिपॉजिट होती हैं इसमें, और ये एज अ क्रेसेंट अपीयर होता है. सो दिस इज हाउ क्रेसेंट अपीयर्स एंड दिस इज हाउ ट्रैम ट्रैकिंग अपीयर्स. ओके, एंड दिस इज हाउ योर subepithelial humps appear. So please, these images are important. Please keep in mind these images. Pause and look at them carefully. So now moving on to that again, this is your crescent that you are going to see in case of RPGN. Now based on what kind of depositions you are going to see and based on the underlying syndromes, and you can classify RPGN into certain types. From type 1 to type 4 we are going to discuss. There are few more, but these are really important for us. Type 1 anti-GBM disease, that is your good pasture syndrome. Anti-GBM disease, good pasture syndrome, type 1. Type 2 is your immune complex associated, that is your lupus nephritis and PSGN that we saw. हमने देखा था कि PSGN भी प्रोसीड कर सकता है एंड शो कर सकता है RPGN की पिक्चर. सो दैट्स वाई RPGN, PSGN can also present as RPGN, and that is immune complex associated. Third type is your posse-immune, and you are going to see ANCA small vessel vasculitis. And type 4, it is double antibody positive that has feature of both type 1 and type 3. You are going to see anti-GBM and you are also going to see ANCA, both positive, anti-GBM positive and ANCA positive. Now first one is your good pasture syndrome. In good pasture syndrome, the antibodies are going to form against your basement membrane. So your basement membrane has it also contains different cells, and different cells has their different antigens.
So antibodies are going to form against those antigens which are present on the basement membrane. So antibodies against basement membrane antigens, that's why it is known as anti-GBM disease. So गुड पैचर में जो प्राइमरी चीज़ अफेक्ट होती है दैट इज़ योर बेसमेंट मेम्ब्रेन. इसका मेन फीचर क्या होता है? यू विल सी डिफ्यूज एल्वियोलर हेमरेज. आपके लंग्स में ब्लीडिंग होगी, देयर विल बी हेमरेज, एल्वियोलर हेमरेज. अलॉन्ग विद दैट यू आर गोइंग टू सी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विद पिक्चर ऑफ आरपीजीएन. सो कभी भी क्वेश्चन में अगर लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और एल्वियोलर हेमरेज का पिक्चर आ रहा है, या फिर अगर एल्वियोलर हेमरेज हो रहा है या फिर लंग हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग इनसाइड द एल्वियोलाई, उसके साथ साथ क्या होगा? हेमोप्टिसिस होगा, ब्लड होगा कफ में, दैट इज योर हेमोप्टिसिस. अगर वो पिक्चर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के साथ आ रही है, दैट इज शोइंग द पिक्चर ऑफ आरपीजीएन, द डिटेरियोरेशन इन द फंक्शन ऑफ योर kidneys, and or you can say your renal function deteriorates within few days to few weeks. और उसके साथ अगर लंग हेमरेज का पिक्चर आ रहा है, दैट इज़ योर गुड पैसेज सिंड्रोम, और वो पल्मोनरी रीनल सिंड्रोम के अंदर भी आता है. सो गुड पैसेज सिंड्रोम रिमेंबर टू थिंग्स, एल्वियोलर हेमरेज एंड पिक्चर ऑफ आरपीजीएन. जब दोनों साथ होते हैं, दैट इज योर गुड पैसेज सिंड्रोम. यू विल ऑल्सो सी हेमोसिडरिन लेडन मैक्रोफेजेस that you will see in the sputum, because there is ongoing bleeding inside the lungs. तो जो स्पूटम होगा उसमें ब्लड होगा. सो जब स्पूटम को स्टडी करेंगे देयर विल बी हीमोसिडरिन. इट इज HLA-DR417 पॉजिटिव, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. एंटीबॉडी is going to be against alpha 3 domain of collagen 4. Alpha 3 type of, there is a alpha 3 domain, or you can say chain, you can say of collagen type 4, उसके against antibodies होती हैं. दो एज ग्रुप, यंग मैन दैट इज लेट 20s और एल्डरली 60s to 70s. It can be triggered by smoking, infection and oxidant. Remember smoking, because mostly in history, in clinical scenarios, smoking is given. So if the smoking is given, lung hemorrhage is given, RPGN picture is given, you have to think of good passage syndrome. What is the presentation? Hemoptysis, obviously. Because of hemoptysis, there will be sudden fall in hemoglobin. You will have fever, dyspnea, hematuria, obviously, and oliguria. Renal biopsy में क्या दिखेगा? There will be focal segmental necrosis and crescent formation. You see, this is your crescent, and here you see focal segmental sclerosis. All these glomeruli here, this part is normal, but this part you see is sclerosed. You cannot appreciate any structure. You cannot appreciate, blood vessels. You cannot appreciate mesangium. You cannot appreciate Bowman space. Nothing is, visible properly. So that means this is the picture of sclerosis, how sclerosis appears on, renal biopsy. And this is the normal tissue of a glomerulus, and this is your sclerosed part, where जहाँ पे sclerosis हो चुकी है. ये crescent कुछ ऐसे दिखेगा. तो you will see crescent formation and focal segmental necrosis, or you can say sclerosis. Sclerosis will ultimately, progress to necrosis. और जैसे ही ये लीजन प्रोग्रेस करेगा, आई टोल्ड यू इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होगा, क्योंकि जो डैमेज ग्लोमेरुलस में हो चुका है वो फर्दर प्रोसीड करेगा इंटरस्टिशियम में, ट्यूब्यूल्स में, वहाँ भी फाइब्रोसिस होगा और ट्यूबुलर एट्रोफी होगा. ट्यूब्यूल्स का साइज धीरे धीरे डिक्रीज होगा, नंबर डिक्रीज होगा, कैपेसिटी उनकी डिक्रीज होगी, और वो उनका फंक्शन डिक्रीज होगा, तो GFR डिक्रीज होगा. वो GFR डिक्रीज करने के अगर होगा तो उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी कुछ कंपनसेटरी मैकेनिज्म फॉलो करेगी. तो जो हेल्दी नेफ्रॉन्स हैं उन पे एक्स्ट्रा लोड आएगा. जब उन पे एक्स्ट्रा लोड आएगा तो जो हेल्दी नेफ्रॉन्स हैं वो भी धीरे धीरे फंक्शन करना कम कर देंगे और डैमेज होते जाएंगे. तो ये ट्यूबुलर एट्रोफी जब स्टार्ट होती है तो ये प्रोसीड होती ही रहती है, और जो हेल्दी नेफ्रॉन्स हैं उनको भी डैमेज करती है, क्योंकि बॉडी का काम क्या है कि जो भी फंक्शन लॉस हुआ है बॉडी में, उसको किसी ना किसी तरह से कॉम्पनसेट करना. बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू नेफ्रॉन्स. द नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स दैट यू आर बॉर्न विथ इज द सेम नंबर ऑफ नेफ्रॉन यू आर गोइंग टू कैरी थ्रू आउट योर लाइफ टाइम. नए नेफ्रॉन्स ऐड नहीं होता है. तो अगर कुछ नेफ्रॉन्स एट्रोफीड हो गए हैं, उनका फंक्शन कम हो गया है, तो
तो बॉडी के ऊपर लोड तो उतना ही है ना, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो सारा लोड हेल्दी नेफ्रॉन्स पे जाएगा, वो फर्दर हेल्दी नेफ्रॉन्स भी डैमेज होंगे और जो रीनल फंक्शन है दैट विल बी that will deteriorate ultimately. What you will see on immunofluorescence, linear staining for IgG, and prognosis will really worst if there is more than 50% crescent, if the serum creatinine is more than 5 to 6 mg per deciliter, and there is oliguria. How we will manage good pasture? Plasmapheresis, that is plasma exchange for 10 cycles, oral prednisolone and cyclophosphamide for 3 months. Moving on to next, lupus nephritis, that is your immune complex mediated type 2 RPGN. Lupus nephritis, it is complication of SLE. Lupus nephritis is complication of SLE. See, what is the antibody that you are going to see in case of lupus nephritis? That is your anti-DNase. Anti-DNase antibody, it is going to attack DNAs. So there will be formation of DNA anti-DNA complex. DNA is your antigen, anti-DNA is your antibody. When anti-DNA is going to attack your DNA, there will be DNA anti-DNA complex, that is your immune complex. And this is the main immune complex, that is your DNA anti-DNA complex, which is going to form in case of lupus nephritis. ये सर्कुलेट करेगा ब्लड सर्कुलेशन में, सर्कुलेट करने की वजह से फिर ये आके अल्टीमेटली डिपॉजिट होगा ग्लोमेरुलाई में. वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कैस्केड को इनिशिएट करेगा, कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे और कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे तो वो डैमेज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड डैमेज होगा. जब डैमेज होगा तो ल्यूकोसाइट्स आएंगी, ल्यूकोसाइट्स भी इन्फिल्ट्रेट करेंगी उस सारे डैमेज को क्लियर करने के लिए. और देयर विल ऑल्सो बी एक्टिवेशन ऑफ प्रोकोगुलेंट फैक्टर. की एंटीबॉडी इज योर एंटी DSDNA, एंटी डबल स्टैंडर्ड DNA एंटीबॉडी. अदर एंटीबॉडीज आर ऑल्सो सीन इन केस ऑफ ल्यूपस नेफ्राइटिस, बट मेनली एंटी DSDNA दिखती है. दूसरी और कौन सी है? एंटी हिस्टोन, एंटी न्यूक्लियोसोम एंटीबॉडीज. बट रिमेंबर एंटी DSDNA, वेन एवर यू सी द इंक्रीज इन द टाइटर ऑफ एंटी DSDNA and you see a picture of RPGN, you are going to think about lupus nephritis. So क्या होगा ultimately? There will be damage, immune mediated, complement mediated, and there will be incorporation of immune cells. All these going to happen, and which will ultimately going to damage your glomeruli. Now based on course of disease, lupus nephritis को further classify कर सकते हैं based on the course, how it progresses. So class 1 is minimal mesangial, means there will be normal histology, you won't be able to appreciate much, there will be no symptom, no renal dysfunction. You will only going to see deposition of immune complex in the mesangium, that is on minimal mesangial. Nothing you are going to see. You and in the second stage there is mesangial proliferation. Again, number of mesangial cells are going to increase, mesangial matrix is going to increase. And why? Because of deposition of immune complexes. So class 1, class 2 mesangium ही affect हो रही है, या तो mesangium का number of cells of mesangium का number of cells बढ़ रहा है, या उसका मैट्रिक्स बढ़ रहा है. बाकी क्या होता है, क्लास 1 और क्लास 2 में बहुत ही कम रीनल डिसफंक्शन देखने को मिलता है, या फिर रीनल फंक्शन ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है. देयर विल बी मिनिमल रीनल मैनिफेस्टेशंस बहुत कम दिखते हैं, और इस प्रोग्नोसिस एक्सेलेंट होता है, और मोस्टली इसमें कोई थेरेपी की, कोई ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती है. सो टाइप 1, टाइप 2 मिजेंजियल मिनिमल मिजेंजियल बहुत कम दिखेगा, एक्सपेंशन मिजेंजियम का. मिजेंजियल प्रोलिफरेशन में थोड़ा सा प्रोलिफरेट होगा मिजेंजियम, थोड़ा सा मैट्रिक्स बढ़ेगा. एंड ये दोनों होगा क्यों? क्योंकि देयर इज गोइंग टू बी डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस. व्हाट इज क्लास 3? क्लास 3 इज फोकल नेफ्राइटिस. फोकल नेफ्राइटिस में क्या होगा? इंडोकैपिलरी प्रोलिफरेशन. इंडोकैपिलरी प्रोलिफरेशन होगा, मीन्स जो ग्लोमेरुलस की सेल्स हैं जो उनको लाइन कर रही हैं, उनका सेल का नंबर बढ़ेगा. सब एंडोथीलियल इम्यून डिपॉजिट. सब एंडोथीलियल मीन्स बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथीलियम जो कि तुम्हारी ग्लोमेरुलस की लाइनिंग है, उसके बीच में इम्यून डिपॉजिशन होगा. सबसे सी ऑलवेज थिंक अबाउट द स्ट्रक्चर्स व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द पैथोलॉजी. कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो रहा है? सबसे पहला स्ट्रक्चर जो काउंटरैक्ट करता है किसी भी एबनॉर्मलिटी को, किसी भी सर्कुलेटिंग अनवांटेड चीज़ को, दैट इज़ योर एंडोथीलियम ऑफ योर ग्लोमेरुलस.
उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन आता है। अगर वहाँ से पास हुई तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे आएगी। अगर वहाँ पे इकट्ठा हुई तो सब एंडोथीलियल डिपॉजिट होगा। अगर वहाँ से क्रॉस हुई तो सब एपिथीलियल डिपॉजिट होगा, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट के बीच जो डिपोजिशन होगा वो सब एपिथीलियल होगा। तो ऐसे थोड़ा सा इमेजिन करोगे ना पैथोलॉजी को तो अच्छे से समझ में आएंगी। देयर विल बी अल्टर्ड mesangium proliferation and mesangial matrix, deposition of immune complexes in the matrix that we are all going to see. There will be focal lesion scarring in the segment of glomerulus. पूरा segment नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, glomerulus का एक पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है. Focal means there is some foci, some focus or some part of the glomerulus is going to be get involved, जहाँ पे लीजन होगा या जहाँ पे मेसेंजियम का नंबर बढ़ा होगा, मेसेंजियल मैट्रिक्स का प्रोलिफरेशन हुआ होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा होगा उस रीजन में, जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनका नंबर बढ़ा होगा. तो ये क्लास 3 में होता है, जिसको हम फोकल नेफ्राइटिस बोलते हैं. प्रेजेंटेशन क्या होगा? दैट देयर विल बी हाइपरटेंशन विद यूरिनरी सेडिमेंट्स. ऑब्वियसली there will be immune complexes, the damaged endothelial cells and epithelial cells, all those going to come in the urine and will appear as a urinary sediment. There will be proteinuria that can be nephrotic range in case of 25 to 30%. That's not really important, but it can present as nephrotic. That's what I'm saying. There will be increased serum creatinine in 25% cases. Management, it responds well to steroids. Class 3, that is your focal nephritis. Moving on to class 4, that is diffuse nephritis. Here it is focal, some part. Here it is diffuse, most of the part. In first and second, it is mainly mesangial. थर्ड में बाहर की चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहा है, लेकिन डिफ्यूजली कर रहा है. फोर्थ में थर्ड में फोकली कर रहा है, फोकल डिपोजिशन हो रहा है, फोकल नेफ्राइटिस हो रहा है. बट थर्ड में और फोर्थ में डिफ्यूज हो रहा है, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट में हो रहा है. सो देर इज ग्लोबल डिफ्यूज इंडोकैपिलरी प्रोलिफरेशन. ग्लोबल डिफ्यूज मीन्स पूरा का पूरा ग्लोमेरुलस में जो कैपिलरीज हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं और उनमें प्रोलिफरेशन हो रहा है. देर इज डिफ्यूज सब एंडोथेलियल डिपॉजिट मीन्स जो चीज़ थर्ड वाले में थी, जो एक पार्ट में थी, अब वो सब पूरे ग्लोमेरुलस को इन्वॉल्व कर रही है. एंड देर विल मेसेंजियल अल्टरेशंस. प्रेजेंट कैसे करेगा? दिस इज इंपॉर्टेंट. हाई एंटी DNA एंटीबॉडी टाइटर. देयर विल बी डिक्रीज सीरम कॉम्प्लीमेंट, हेमेचूरिया, आरबीसी कास्ट, ऑब्वियसली प्रोटीनूरिया. 50% ऑफ देम मे हैव नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीनूरिया. एंड वेन एवर यू हियर नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीनूरिया इन केस ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम, हमेशा समझ जाओ कि डिजीज थोड़ा एडवांस स्टेज में है, क्योंकि अर्ली स्टेज में इट इज़ गोइंग टू सी शो अस द पिक्चर ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम. बट अगर डिजीज एडवांस होती है तो नेफ्राइटिक पिक्चर भी शो करेगी अलॉन्ग विथ योर हेमाचूरिया, दैट इज योर नेफ्राइटिक पिक्चर. हाइपरटेंशन क्रेसेंट ऑब्वियसली बिकॉज आरपीजीएन की पिक्चर है. मैनेजमेंट कैसे करेंगे? हाई डोज स्टेरॉइड्स, साइक्लोफॉस्फामाइड या फिर माइकोफेनोलेट मॉफिटिल 2 से 6 महीने के लिए देंगे. उसके बाद मेंटेनेंस थेरेपी, जिसमें कि स्टेरॉइड्स का साइक्लोफॉस्फामाइड और इसका डोज थोड़ा लोअर कर देंगे. क्लास 5 इज मेम्ब्रेनस नेफ्राइटिस. Means you are going to see subepithelial immune deposits and there will be thick GBM. The disease has further progressed. 60% of them are now going to see nephrotic syndrome. Predisposed to renal vein thrombosis, hypertension, edema you are going to see, and it is also being treated like class 4. So in class 5 just it is a bit of advanced stage and it is treated like class 4. The last one, the class 6 is your sclerotic nephritis. That means 90% of your glomeruli is sclerosed, dysfunctional, no function has remained. Most of global sclerosis means सारी की सारी जो glomeruli है Bowman's capsule में, more than 90% of them has been sclerosed now. They have lost their function. उनमें कोई structural integrity नहीं बची है, पूरी dysfunctional है. This is end stage renal disease and there will also be interstitial fibrosis. Management में क्या करेंगे? Dialysis और ultimately transplant. That's it. This is how you can see. This is, you can see 90% sclerosis, that is known as global sclerosis. All these area you see, everywhere you can see there is sclerosis. Everywhere there is sclerosis. You cannot appreciate any structure. And this is how
This is how the class 1 is going to appear, class 2, class 3, class 4, class 5. You can pause it and see it, and relate it from the how the biopsy picture that I told you in all those. Like in first one, there will be very little mesangial immune complex deposition. So here you can see in the first one, there is a very little immune there is very little mesangial immune deposition. In second one, over these areas you can see mesangial proliferation you can see. In the third one, you can appreciate these areas focal deposition. In fourth one, you can see all these areas you cannot appreciate much these structures. In fifth one, again you can see like GBM thickening, and whenever there is GBM thickening, if you here you can see, you can appreciate there is thickened GBM. Moving on to next, ANCA small vessel vasculitis. ANCA means your anti-neutrophilic cytoplasmic antibody. The antibodies are going to get formed against neutrophils. What you are going to see in case of ANCA small vessel vasculitis, feature of small vessel vasculitis along with picture of glomerulonephritis. Serum ANCA, it is of two types. One is anti-protease 3 antibody and one is anti-myeloperoxidase antibody. One of them is going like you are going to see in the picture of ANCA small vessel vasculitis. How ANCA associated damage is going to occur? क्या होगा? So with the help of T cell, leukocyte and monocytes are going to get activated, और ये small blood vessel के walls को damage करेंगे. ठीक है? Then they are going to include glomerular walls also. See, vasculitis is all about pathology of your blood vessels, small blood vessels, that is your arterioles, your venules. So your glomeruli is also a kind of arteriole. It also comes under small blood vessels. So it is going to involve blood vessels throughout the body, and it also going to then again come to the glomerular blood vessels, and it is going to ultimately involve those also. So including glomerular vessels. क्या होगा? एंडोथेलियल इंजरी होगी. ब्लड वेसल में कुछ भी होगा तो क्या होगा? ब्लड वेसल इज लाइंड बाय एंडोथेलियम, और सबसे पहला स्ट्रक्चर जो एनकाउंटर होगा अगर ब्लड में कुछ भी है तो एंडोथेलियम है, तो एंडोथेलियल इंजरी होगी. अब जहाँ भी इंजरी होगी तो इंजरी को ओवरकम करने के लिए, उसको सबसाइड करने के लिए ल्यूकोसाइट्स आएंगी, और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा. देयर विल बी एक्सटेंशन ऑफ इन्फ्लेमेशन. So ANCA small vessel vasculitis includes 3, that is your GPA, MPA and EGPA. GPA is granulomatosis with polyangiitis, that is known as Wegener's, and it includes your NTPR3. Most commonly it includes NTPR3. Like the antibody that is going to form in case of GPA is NTPR3, anti-protease 3. In case of MPA and Churg-Strauss, that is your EGPA, the main antibody is your anti-myeloperoxidase. So in these cases, most common is your anti-myeloperoxidase. First one is your GPA, that is also known as Wegener's. What is the presentation? The presentation will be fever, cough, rhinorrhea. Also there will be sinusitis. That will be, common in case of GPA. Polyarthralgia, arthritis, hemoptysis, shortness of breath, microscopic hematuria and proteinuria. Remember, hemoptysis and sinusitis, rhinorrhea, related to these structures, related to your nose. You will have rhinorrhea, sinusitis and hemoptysis. If you are seeing these pictures all together, that is your GPA. So sinusitis, rhinorrhea, hemoptysis, arthralgia and hematuria, that is the picture of your GPA. Now if all these things are going to present but there is no renal involvement, that is your limited GPA. Chest x-ray में क्या दिखेगा? In chest x-ray you are going to see nodules and infiltrates with cavities. Biopsy में क्या दिखेगा? Small vessel vasculitis obviously, and surrounding that inflammation of the blood vessel there will be non-caseating granuloma. Here you can see, if you can appreciate over here, this is your nodule here. This is your cavity. Nodules and cavities you can see appreciate in the chest x-ray. This is your blood vessel.
this is your inflammation of blood vessel, that is your vasculitis, and all this is your non-caseating granuloma that you are going to see in case of ANCA small vessel vasculitis. Renal biopsy में क्या दिखेगा? Segmental necrotizing glomerulonephritis with immune deposition. Means segment of like glomerulus is going to be necrosed, dead cells, and there will also be, if there is granuloma, that means that part of the glomerulus has already lost its functions. उसमें पहले ही फंक्शन नहीं बचा है क्योंकि वो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो गया है, तो और वो अल्टीमेटली क्या होगा, उसमें नेक्रोसिस होगी. सो दैट्स वाई सेगमेंटल नेक्रोसिस इन सेगमेंटल नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और उसके साथ साथ इम्यून डिपोजिशन दिखेगा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एमपीए, दैट इज योर माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस. इसमें क्या होगा, सारा पिक्चर सेम होगा जीपीए के जैसा, बट इसमें लंग इन्वॉल्वमेंट और साइनोसाइटिस नहीं होगा. सब कुछ सेम एज ऑफ जीपीए, बट इन एमपीए what is different, that there will be no lung involvement, there will be no granuloma that we saw in case of GPA, and there will be vasculitis, but that vasculitis will be without granuloma. In GPA, vasculitis with non-caseating granuloma, here vasculitis but no granuloma. In GPA, there is lung involvement and there is sinusitis, but in case of MPA, both are not, you are not going to see both. Next is your Churg-Strauss, which is also a form of ANCA small vessel vasculitis, that is also known as EGPA. Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis. With the name, it's obvious. It's autoimmune. A small vessel vasculitis because it's it is a part of ANCA small vessel vasculitis. There will be peripheral eosinophilia. That's important. That here there will be peripheral eosinophilia. Cutaneous purpura, asthma, you need to remember asthma. If you are going to see the picture of asthma along with a picture of RPGN, it is your Churg-Strauss or EGPA. Allergic rhinitis, lung inflammation, cough, hypertension, edema, hematuria, proteinuria, that obviously you are going to see, and pulmonary infiltrate. So asthma, cutaneous purpura, peripheral eosinophilia, and picture of RPGN, nothing but EGPA or Churg-Strauss. बायोप्सी में क्या दिखेगा, स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस का उसका पिक्चर देखेगा ही बायोप्सी में. एंड फोकल सेगमेंटल नेक्रोटाइजिंग नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, बिकॉज जहाँ भी ग्रेनुलोमा होगा उसके आसपास थोड़ा नेक्रोसिस का पिक्चर देखेगा. नाउ व्हाट इज हाउ यू विल मैनेज द केस ऑफ ANCA स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस. प्लाज्मोफेरेसिस, प्लाज्मा एक्सचेंज, दैट इज फॉर 14 cycles. Methylprednisolone, that is your steroid, and cyclophosphamide for 3 months. Now, whenever the acute inflammation, जब भी acute inflammation कम हो जाएगा, उसके बाद हम स्टेरॉइड की डोज को टेपर कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, और मेंटेनेंस करेंगे हम बाई साइक्लोफॉस्फामाइड या एजाथायोप्रिन फॉर 1 year, अप टू अ ईयर. नेक्स्ट इज योर IgA nephropathy. This is also shows the nephritic picture. It is sporadic, no regular presentation or very irregular pattern of distribution in population and in genetics everywhere. That means sporadic. There will be IgA deposition in mesangium. That is your IgA nephropathy. You must be familiar with the IgA vasculitis. That is your Henoch-Swanlein purpura. Henoch-Swanlein purpura, that is your IgA vasculitis. This is your IgA nephropathy. How these two are different? See, these two are similar in so many cases, but HSP, it is going to occur at really young age, that is less than 20 years, and it has abdominal symptoms. Henoch-Swanlein purpura is going to occur in younger age group, that is less than 20 years, and it includes abdominal complaints. ये दोनों चीज़ें IgA nephropathy में नहीं दिखेंगी. Then there will be IgA deposition in mesangium. mesangium में IgA deposition और भी diseases में होता है, जैसे ये और क्रॉन्स, GI adenocarcinoma, chronic liver disease, chronic bronchitis, leprosy, Sjogren, इन सब में IgA deposition होता है उसमें mesangium में. But these are not usually, this is not usually significant.
बिकॉज जो ग्लोमेरुलस का इन्फ्लेमेशन होता है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ दिस आईजी डिपोजिशन उतने सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इसीलिए हम इसको आईजी नेफ्रोपैथी में कंसिडर नहीं करते. दैट्स वाई these diseases are not considered in IgA nephropathy because the extent of renal dysfunction is not so much, and in most of the cases it is almost negligible, so it's not contributed or included in the IgA nephropathy. There is male predominance second to third decade of life, whereas henoxolin purpura less than 20 years age. Now this is immune complex mediated glomerulonephritis. There is diffuse mesangial IgA deposition. mesangium में IgA का deposition होगा mesangial cells में, और उसकी वजह से mesangial hypocellularity होगी, increase in number of mesangial cells. डिफेक्ट क्यों होता है, क्यों IgA ऐसा डिपॉजिट होता है? IgA के दो कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं. पहला इसका प्रोडक्शन जो कि होता है प्लाज्मा सेल के थ्रू, दूसरा इसका क्लियरेंस जो कि लीवर में होता है. तो या तो इसका प्रोडक्शन डिफेक्टिव है जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर इसका क्लियरेंस डिफेक्टिव है लीवर में जिसकी वजह से क्लियर नहीं हो पा रही है. दीज आर द टू फैक्टर्स. बिकॉज ऑफ दोज देर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ IgA एंटीबॉडीज and which is going to further deposited in the mesangium, causing mesangial hypocellularity and the proliferation. What you are going to see in the biopsy? In biopsy you are going to see segmental sclerosis. The segment of glomerulus is going to get sclerosed or necrosed. Crescent बनेगा क्योंकि RPGN का केस है. और DPGN, that is diffuse proliferative glomerulonephritis, means पूरा का पूरा glomerulus जो है वो proliferate हो गया है. That is diffuse proliferation, like ऐसा कोई focus नहीं है, पूरा का पूरा glomerulus ही proliferate हो गया है. क्यों? Because of deposition of IgA. IgA का डिपोजिशन क्यों ये सब कर रहा है? कभी भी बॉडी में कुछ भी चीज़ जो अनवांटेड है, जो उस जगह पे नहीं होनी चाहिए लेकिन है वहाँ पे, तो वो कोई ना कोई सिम्टम इलिसिट करेगी, कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म इलिसिट करेगी जिससे कि बॉडी उसको रिमूव कर पाए. और जब वो चीज़ स्टार्ट होती है उसको रिमूव करने के लिए, तो अल्टीमेटली वो नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज करती है. तो इसी वजह से ये सारे सिम्टम्स होंगे. वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएगी, कॉम्प्लीमेंट कैस्केड होगा, वहाँ पे सारी चीज़ होगी. इसकी वजह से पूरा का पूरा डैमेज होगा. और जब डैमेज होता है तो स्क्लेरोसिस होगी, फाइब्रोसिस होगी, नेक्रोसिस होगी, और सारे पिक्चर्स आपको ओवर द पीरियड ऐसे दिखेंगे. क्योंकि अर्ली स्टेज में डिजीज़ आइडेंटिफाई नहीं हो पाती, बिकॉज उसके लिए अच्छे खासे सिम्टम्स चाहिए. मतलब अच्छा खासा प्रोटीनूरिया चाहिए, हेमेचूरिया चाहिए, या फिर कोई ऐसा रीनल डिसफंक्शन हो जिसकी की वजह से पेशेंट अनकंफर्टेबल हो, या फिर थोड़ा बॉदर हो जिसकी वजह से वो फिर हॉस्पिटल में जाए, फिर उसका डायग्नोसिस हो. बट ये जो पिक्चर है ये अर्ली स्टेजेस में होती हैं, और तब तक पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है. जब पेशेंट सिम्टोमेटिक होता है, व्हेन द पेशेंट गोज टू द हॉस्पिटल एंड इज डायग्नोस्ड विद फॉलोइंग एनी ऑफ द डिजीज, it's already, the damage is already has occurred so much that whenever the in hospital the biopsy is being taken and it is visualized, you are going to see a crescent and all these necrosis and sclerosis, all these things. So this is the reason that in the first picture you are going to see these kind of findings. Presentation क्या होगा? Macroscopic hematuria होगा ऑब्वियसली, प्रोटीनूरिया माइक्रोस्कोपिक होगा और थोड़ा सा लेट में अपीयर होगा. और रीनल फेल्योर या RPGN होता है लेकिन रेयर होता है. मैनेजमेंट एस इनहिबिटर्स प्रोटीनूरिया को मैनेज करने के लिए, एस्टेरॉइड, प्लाज्माफेरेसिस और साइटोटॉक्सिक एजेंट्स अगर RPGN का केस है तो. नेक्स्ट इज योर एल्पोर्ट सिंड्रोम. एल्पोर्ट सिंड्रोम इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है. 85% एक्स लिंक्ड होता है. म्यूटेशन इन अल्फा चेन. एक्स लिंक्ड मोस्ट कॉमन होता है, दैट इज 85%, और ड्यू टू म्यूटेशन इन अल्फा 5 चेन ऑफ कोलेजन टाइप 4. सो रिमेंबर 85% XL and alpha 5. 15% the rest of them are autosomal recessive. The mutation is in alpha 3 and alpha 4 chain of collagen type 4. Autosomal dominant is also there, जहाँ पे भी alpha 3 alpha 4 का म्यूटेशन होता है, बट वो बहुत रेयर होता है. You will rarely see. So just remember these two, X linked, that is your
that will be seen in 85% of the cases. The defect is in the mutation of alpha 5 chain of collagen type 4, and autosomal recessive, which accounts for 15% of the cases, जहाँ पे म्यूटेशन अल्फा 3 और अल्फा 4 चेन में होगा ऑफ कोलेजन टाइप 4. नाउ क्या मतलब है इसका कि वाई इफ देयर इज म्यूटेशन इन कोलेजन चेन्स, तो ऐसा कोई नेफ्रोपैथी हो रही है, बिकॉज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन कंटेन्स ऑल दीज अल्फा 3, अल्फा 4 एंड अल्फा 5 चेन्स ऑफ कोलेजन टाइप 4. सो अगर इसमें कोई डिफेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली देयर विल बी डिफेक्ट, देयर विल बी पैथोलॉजी. सो your basement membrane contains all these three, alpha 3, alpha 4 and alpha 5 of collagen type 4. X-linked में क्या होगा? X-linked में males are getting affected more. Females भी होती हैं but उनमें symptoms इतने prominent नहीं होते, but males they are they will be affected more. In autosomal recessive both genders are affected equally. And early and severe disease, अगर हिस्ट्री में पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हैं और रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अर्ली है और डिजीज सीवियर है, देन इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव. बट अगर डिफ्रेंशिएट करना हो एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल रिसेसिव में से, तो कैसे करेंगे? सी योर स्किन कंटेन्स अल्फा 5 चेन ऑफ कोलेजन टाइप 4. सो अगर हमें डाउट है, वी विल टेक द स्किन बायोप्सी, देन वी विल विजुअलाइज कि अल्फा 5 डिफेक्टिव है कि नहीं है. इफ इन स्किन बायोप्सी अल्फा 5 इज डिफेक्टिव, दैट मीन्स इट इज एक्स लिंक्ड. If not, then it will be autosomal recessive. So to differentiate X-linked and autosomal recessive of Alport, we'll take skin biopsy. Skin contains alpha 5 and not alpha 3 and alpha 4. अगर alpha 5 defective होता है, then it is X-linked. Next, presentation, hematuria, obviously, GBM thickening and splitting. Splitting and thinning, sorry. GBM thinning and splitting. This is the prominent feature, very important feature of Alport. Splitting of GBM. See, GBM, let's say this is GBM, a single layered GBM. There will be splitting. The GBM splits into two, and splitting mostly appears in the later stages when there is healing is going to occur, but you are going to see thinning and then splitting. So in Alport, you are going to say splitting. There will be mild proteinuria, less than 1 to 2 grams in 24 hours. And that is also going to appear in later stages. That is followed by chronic glomerulosclerosis. There will be sensory neural hearing loss. This is very important. Also anterior lenticonus. Your lens becomes cone-shaped in anterior aspect. In management, ACE inhibitor for hypertension and to slow down the renal progression. And ultimately, the option is your renal dialysis and your renal transplant. So in Alport syndrome, if the question says the patient has SNHL, anterior lenticonus, along with picture of nephritic syndrome, hematuria and all that, there is a split basement membrane, you are going to think of Alport syndrome. Now we have finished all the all the syndromes, all the diseases that are going to include under the nephritic syndrome. And I told you I will give you overview of like how you can remember all these syndromes. So starting with that, first one is your PSGN. In PSGN, you are going to see, you remember two things, that is age 2 to 14 years and hump, that is your subepithelial. This is about PSGN. Second is your MPGN. In MPGN, remember a few things. You will see GBM thickening. GBM thickening. You will see, tram tracking. Tram tracking. This is hump, tram tracking. And you are also going to see hypocomplementemia, that is decreased C3. And you can also remember hepatitis C and B. Okay. Next one is your RPGN. In RPGN, you are going to see the picture of progressive renal failure, that is within days to weeks,
days to weeks, and crescent. In RPGN, moving on to those other syndromes. First one is your good pasture. In good pasture, you are going to see lung hemorrhage plus RPGN like picture. There will be history of smoking and crescent on biopsy. This is the picture of good pasture. Next is your lupus nephritis. In lupus nephritis, you are going to see anti-DS DNA titer, crescent obviously, and you are going to see subendothelial immune deposits and mesangial proliferation. Next is your ANCA small vessel vasculitis. Here you are going to see vasculitis symptoms. Vasculitis symptoms plus picture of glomerulonephritis. Now again, it has different parts. That is your GPA, which is your Wagner. In Wagner, you are going to see sinusitis or rhinorrhea, hemoptysis. In chest X-ray, you are going to see nodules and cavities, and picture of glomerulonephritis. Next is your MPA. In MPA, you are going to see no lung involvement, no granuloma. You are going to see picture of vasculitis plus glomerulonephritis. Next is your EGPA. Here you are going to see eosinophilia, asthma, and picture of glomerulonephritis, and also you can add purpura. Next is your IgA nephropathy. Here you are going to see IgA in mesangium. उसकी वजह से mesangial proliferation वगैरह होगा. You are going to see crescent and segmental sclerosis. Remember segmental sclerosis and IgA in mesangium. It's your IgA nephropathy. And the last one is your Alport. In Alport, you are going to see hematuria plus sensory neural hearing loss and GBM splitting or thinning. So this is the summarized version. If I have to say, if you have to remember for the exam and for the quick revision, just remember these points. PSGN, age 2 to 14 years, subepithelial hump. MPGN, GBM thickening, tram tracking, decrease complements, and hepatitis C and B. RPGN, you are going to see progressive renal failure within days to weeks, crescent formation. Syndromes that are associated, your good pasture. In good pasture, if there is lung hemorrhage, hemoptysis, and history of smoking, presented along with RPGN picture that I told you earlier, that is your good pasture. In lupus nephritis, you are going to see increased anti-DS DNA titer. That is important. Crescent you are going to see, and mesangial proliferation and subendothelial immune deposits.
ANCA small vessel vasculitis, you are going to see vasculitis plus picture of glomerulonephritis. In GPA, there will be rhinorrhea, sinusitis, hemoptysis. In a chest X-ray, you are going to see nodules and cavities. In MPA, similarly, similar to your GPA, but no lung involvement and no granuloma. EGPA, that is Churg-Strauss, eosinophilia, asthma, and a picture of glomerulonephritis, purpura you can remember, IgA nephropathy, IgA and mesangium, and segmental sclerosis. Crescent could be present, could be not. And Alport syndrome, sensory neural hearing loss, along with hematuria or the picture of nephritic picture. And also your GBM thickening or splitting. So this was all about nephritic syndrome. I hope I was able to contribute something beneficial to you. Next video will be about nephrotic syndrome. सारे के सारे nephrotic syndrome cover करूँगा और like ऐसे ही at the end I will give you some basic idea, a basic the concise version of all the nephrotic syndrome. I hope you liked this lecture or discussion, whatever you can say. Please put your comments in the comment box and tell me if something, any kind of topic that you want me to discuss over here, and any kind of improvement or anything that need to be added or excluded. I will look into that. So thank you so much for listening to this discussion. Have a nice day.